Good morning, good morning, good morning, students who are attending online. Manvi Gupta ji, good morning. We are live also. Let's start. थोड़ा आगे आ जाइए, मुझे भी थोड़ा कम चिल्लाना पड़ेगा. Shall we start? हाँ यार, थोड़ा सा. चलिए, so now we will, as we have managed the Indian neighborhood relations, and with that we have also done the effect of policies in neighborhood on India, like China's intervention in Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar. What effect is going to on India's foreign relations, right? So, Raj, welcome to you also. So sometimes we have some of them who has, we miss you a lot. Oh, I miss you too. I miss you too, Raji. So if you miss me a lot, come to the class. और हम तो रेगुलर क्लास कर ही रहे हैं, तो फिर मिस यू अ लॉट. अच्छा, चलिए. तो एनी इश्यूज विद द लास्ट टिल द क्लास, एनीवन? आपको क्लियर हो गया गंगा मैकॉन से? गंगा मैकॉन इज नथिंग लाइक जिसके गंगा और मैकॉन को जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है. ये ऐसा है कि कल्चरल है, दोनों के बीच में टाइज रहा है, सिविलाइजेशनल. ये जो दो नदियां रही हैं, दो नदियों के साइड में सिविलाइजेशन रहा है, तो उन सिविलाइजेशन की वजह से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हम पुराने सिविलाइजेशन एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है. तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड रिलेशंस with the world, right? And in this we are not going to do India's relation with all the 200 or 205 nations. इतने सारे nations हैं, तो उनके साथ हम नहीं करेंगे. We will just do the important with the relations in the recent year. So today the topic which we are going to start is a topic, good morning Manvi ji, is that relations between the oldest democracy in the world, which is USA, and the largest democracy in the world, that is India. Why it is known as the largest? Because of being a populace. Okay, so today relations, we will start with the world's oldest democracy, and also we can say the most developed nations in recent year. सबसे developed or powerful nations, we can say that. Yes or no? In the multipolar world also order also, USA is still a superpower. ठीक है, with oldest democracy, with the largest democracy. Or we can say in another terms, the superpower with a superpower with the emerging power in the world order. India is an emerging power, उभरता हुआ शक्ति है वर्ल्ड ऑर्डर में. हम उसके बीच में रिलेशंस देखेंगे. नाउ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इज नॉट लाइक वेरी स्मूथ. ठीक है, ये रिलेशन स्मूथली नहीं चला है. दिस रिलेशन इज इरप्टेड आफ्टर 1947, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई है, एंड आफ्टर द कोल्ड वॉर, basically when India has chosen for the NAM, right, does not tilted towards, we have seen that during the phase of Cold War. अब उसको फिर से डिस्कस नहीं करेंगे, just quick revisions. During the Cold War there was a two pole, capitalist and communalist, socialist. communalist हम जिसे कहते हैं,
So on the one side, USA is there as a representing the capitalist, and USA and the neighbor Pakistan has joined the USA bloc. ये हमने देखा था, सीटो ज्वाइन कर लिया, सेटा ज्वाइन कर लिया, यस और नो. तो यूएसए उभरता हुआ था एक सुपर पावर, इंडिया वहां पर ना ही टिल्ट हुआ. द रीजन बीइंग not tilted towards America, it's just they are been suppose of a capitalist and India is against the capitalist and it is an advocate of democracy. इस वजह से उसने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था, राइट. So because of this, the relations between India and America is not a smooth relation, rather it is an ups and down has been the relations, right. Like Smiling Buddha जो project था इंडिया का, and Smiling Buddha project is related to nuclear, yes or no, and it was started in during the era of Indira Gandhi, when they have threatened, US has threatened, right. If even the USA has supported Pakistan in 1965 also, 99 also. So relations between these two is not smooth. But after the advent of 1991, after the fall of this USSR, और LPG की आने की वजह से, that is liberalization, privatization की आने की वजह से relations में थोड़ा आता है. But also it in 2000 also it has not been. In the new millennia, the relation is not smooth. But in recent period, the relations between the two has been, they are working towards the cooperations of each other. And the basic reason behind the relations of smooth relations between India and USA is that emerging China. To counter China in this Asian region, which is also a emerging power in Asia along with the India and Japan. They want to counter because China is lean towards being a communist, lean towards Russia, and it is a protectionist country who protect their own economy and who is challenging the hegemony of US. ठीक है, इसकी वजह से यूएस और इंडिया के बीच का रिलेशन है वो स्ट्रांग होता चला गया अभी रिसेंटली. और रिसेंटली में आप देखिए तो अर्लियर जहां पर यूएसए टेक्नोलॉजी 40 to 45% टेक्नोलॉजी वाज ट्रांसफरिंग फॉर रिलेटेड टू फाइटर जेट. Now in the recent meeting between our Prime Minister and President of USA in the June and July, they have, the GE company has agreed to transfer the full technology which support India Make in India policy. It means by now onwards, now India will develop its own defense fighter jet in India, that is in Make in India policy, right. And the another reason for a good relations between developing good relation is Indian diaspora. Indian diaspora are been in majority in US. They have been there settled down, right. So in USA, the Indian diaspora become a important for political reason in America. They have also played an important role in elections in USA. And this, the Modi government has started to attract the Indian diaspora towards their nations, the soft power, cultural ties, retail diplomacy, yes or no, right. So this also let them America, for America, the Indian diaspora become an important role, and because of this also they have played many role. And another reason being a huge market for the American product, like we have a populace, so Googles, Apples, we have Apple का market बहुत है, phone, एप्पल फ़ोन, गूगल का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, फेसबुक का मार्केट है, ट्विटर का मार्केट है. तो एक पॉपुलस नेशन होने की वजह से मार्केट में भी इसकी स्ट्रैटेजी रही, मार्केट भी बड़ा रहा है. तो एंड बीइंग ए कैपिटलिस्ट दे नीड ए गुड मार्केट, यस और नो. इस वजह से भी, और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, रिटर्न्स भी अच्छा है, देन सेटल्ड इकोनॉमी ऑल्सो. एंड ड्यूरिंग द कोविड इट हैज हेल्प्ड यूएसए ऑल्सो, राइट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So this is all the things developing between reason for being a good relations India and USA. Okay, this is an introductions to this. So if you see the map, this is USA, right? And this is India. Yeah. So I will write down the
India-US relations. Now in this we will start with the development background with relations, and then we will merge with the current development in that relation. इंडिया का है यूएसए के लिए, इंडिया है यूएसए के लिए जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस. इंडिया का जो प्लेस है ना, so this is the place where USA and India, if they join together and the progress is on, so they can counter China presence in Indo-Pacific. ठीक है, ये मलक्का स्ट्रेट है आपका, हमने देखा है, राइट. एंड दिस इज द स्विस कैनाल, एडन, बाबे मंदाब, यस और नो, राइट. तो ये आपका मेजर ट्रूड एरिया है, ट्रेड एरिया, राइट. एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ एन बेल्ट BRI इनिशिएटिव, राइट. इसके थ्रू USA will counter China, and because of this India become importance for you who get control in the Indo-Pacific. Is it clear? And America is important because of her development. फंड आएगा, एक सुपर पावर के साथ रिलेशंस रख, तो उससे हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, राइट. वी प्रोवाइड, देखिए वहाँ इसलिए क्या होता है कि जब भी वीज़ा का H1 वीज़ा को वो जब भी रिन्यू करते हैं तो इंडियंस वर गेट अफेक्टेड, यस और नो. दोज हु आर माइग्रेटेड, ब्रेन ड्रेन जो हम बात करते हैं, टेक्नीशियंस IIT से करके फिर वो फॉरेन US में जाकर जॉब कर रहे हैं. तो इंडिया इज job provide USA is a job provider for Indian populations, labor intensive market, labor दे रही है वहाँ. So in this reason geo strategically important है, but India is important in terms of geo. अभिषेक चौहान जी, गुड मॉर्निंग एवरी, ठीक है. इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? चलिए, write down India and US bilateral relations. India-US relations. India-US bilateral relations have developed into a comprehensive global strategic partnership. Have developed into global strategic partnership based on comprehensive global strategic partnership. Got it, comma partnership, comprehensive strategic partnership based on shared democratic values, and increased convergence of interest, and increased convergence. Do you understand the meaning of convergence? एक दूसरे में आकर के कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्जेंट एक दूसरे से दूर जाना, कन्वर्जन एक दूसरे के नजदीक आ रही है. तो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन bilateral, regional and global issue. रीजनल, बायलेटरल एंड ग्लोबल इशू. बायलेटरल इश्यूज भी है, रीजनल इश्यूज और ग्लोबल, राइट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया एंड US bilateral cooperation is broad based and multi sectoral. India and US cooperation is broad based. Bilateral cooperation is broad based and multi sectoral. मल्टी सेक्टोरल समझते हैं?
तो आप ऐसे हाथ हटाइए। हाँ, हर सेक्टर में है, किसी एक दो पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं, रिलेशन है बाई ट्रेड, बट सभी सेक्टर्स में, मल्टी सेक्टर, लाइक डिफेंस है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, राइट, आईटीज है, ट्रेड है, then there would be another semiconductor, digital information. तो बहुत सारे सेक्टर्स में रिलेशंस डेवलप्ड हो रहे हैं, एंड इट इज अ मल्टी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मल्टी सेक्टोरल रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया एंड यूएस आर लाइक नेचुरल पार्टनर्स। इंडिया एंड यूएस आर लाइक नेचुरल पार्टनर्स। Next point, the rising China and need for a free and open, the rising China, नेचुरल पार्टनर कैसे हैं, क्या दोनों पड़ोसी हैं, they are naturally partners, they are incorporated in many field। नेचुरल का क्या मतलब होता है? बिना किसी नुकसान के। हाँ, हमने देखिए उनके यहाँ से उनके कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट लिया हमने, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्पायर हुए हम अपने, राइट, हम वहाँ से हमने यूएसए में आज अपने हमारे डायस्पोरास भी हैं, एक नेचुरल डेस्टिनेशन, लोगों का पहला चॉइस यूएस से आ जाती है, कहाँ जाना है, यूएस, न्यूयॉर्क, सियाटल, लॉस एंजलिस, लास वेगास। हाँ, नेचुरल। Next point, the rising China and need for a free and open Indo, the rising China and need for a free and open Indo-Pacific, 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 Indian Ocean, Pacific Ocean. This is the reason of Indo-Pacific. समझ रहे हैं? Yes or no? This is an Indian Ocean, Pacific, ये Atlantic आपका आ जाता है, Pacific उधर हो, ये this is यहाँ पर यूएस, आई मीन वो अलास्का पार्ट अगर हम देखें तो रशिया को, तो ग्लोब को खोल दिया है ना, आप ग्लोब देखेंगे तो दैट इज कनेक्टेड। पृथ्वी, अर्थ ऐसी नहीं है, गोल है। डिमांड ओपन इंडो पैसिफिक कॉमा, डिमांड्स क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन द टू, डिमांड्स क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन द टू, and must continue to lead global efforts, and must continue leads global efforts to lead global efforts to promote peace, prosperity and security, global efforts promote peace, prosperity and security। ठीक है, now we will learn cooperation India and right on heading area of cooperation or relations of cooperation, आपने लिखा ना मल्टी सेक्टोरल cooperation। now we will discuss cooperation between India and EU. Write down the first is defense,
डिफेंस, ठीक है। अब डिफेंस के अंदर में इनके बीच में दो तरीके का रिलेशन, राइट। तो फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द डिफेंस, between India and US. So first is agreement between the agreement related to defense, and the next is a trade defense trade. एक तो डिफेंस एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, एंड अनदर इज इन अ ट्रेड इन डिफेंस सेक्टर, जिसका हम अभी आप देख लीजिए, ठीक है। चिनुक भी आया, अपाचे, यस और नो। तो दिस इज अ ट्रेड बिटवीन इन डिफेंस सेक्टर। एक तो एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में कि हमारे बीच में आर्मी जो है वो अभ्यास करेंगे, आर्मी अभ्यास, नेवल नेवल एक्सरसाइज करेगी इंडो पैसिफिक। याद है आपको वो मैंने बताया था, दैट इज अंडर दिस देयर आर वी हैव सीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान आर डूइंग अ नेवल एक्सरसाइज, यस और नो, यस। वहाँ पर तो ये हो गया क्या, डिफेंस एग्रीमेंट हो गया दोनों के। और ट्रेड जैसे अब रिसेंटली कि हम टेक्नोलॉजी बनाने में हेल्प करेंगे, ट्रेड में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, तो दिस इज ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड अमेरिका एंड अ ट्रेड एग्रीमेंट। तो विल डील अंडर दीज टू हेडिंग। पहले आप लिखिए डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन इन डिफेंस इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड अमेरिका, राइट। द फर्स्ट सब हेडिंग इज एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट। हाँ, डिफेंस एग्रीमेंट आप समझ गए। इंडिया और अमेरिका के बीच का पहला कॉपरेशन है डिफेंस। इसमें दो डायमेंशंस, एक एग्रीमेंट है और एक ट्रेड है, दोनों को अलग अलग सेक्टर में। राइट ऑन द फर्स्ट agreement, defense agreement. India US defense cooperations came into existence in 1960. India US defense cooperations came into existence came into existence in 1962 in the wake of Indo-China War. In the wake of Indo-China War, 1962 और चाइना के बीच में वॉर हुई थी। The wake of Indo-China War, ठीक है। But the cooperation soon stopped. But the cooperation soon stopped because of the Indo-Pakistan War in 1960. Soon stopped because of Indo-Pakistan War in 1965. Why? Because Pakistan was aligned towards USA के ब्लॉक को पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था, इसलिए फिर जैसे वॉर हुई, the relations stopped. They have refused to help. 1999 में जब कारगिल वॉर हुई थी, India has asked the USA to provide a satellite imagery of that पाकिस्तानी सोल्जर, कारगिल के ऊपर का इमेज दीजिए हमें थ्रू जीपीएस लोकेशंस। इंडिया वांट टू एक्चुअली नो बट डिनाइड। तभी जा करके अभी इंडिया ने अपना IRNS-7 बनाया है, सैटेलाइट फॉर द हैज डेवलप्ड इट्स ओन जीपीएस सिस्टम। तार चढ़ाव हमेशा रही है रिलेशन यूएस के, कभी भी इक्वल नहीं रहे हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस and marketing. Is this clear? Next point. In 1995, the agreement on India-US Defense Cooperation got finalized. 1995, the agreement on India-US Defense Cooperation got finalized.
Yeah. Now write down the next, that in 2016, this is the historical background related to and US defense act. Now, what has been in development in recent years? In 2016, India was accorded the status of major defense partner. India in 2016, India was accorded the status of major defense partner. ठीक है, next point. In 2018, a 2+2 dialogue, 2+2 dialogue was held between India and USA in India. You understand the meaning of 2+2 dialogue? Anyone? USA held in India, 2018, 2+2 dialogue. 2+2 dialogue, it means the major ministry, or you can say that cabinet of both the nations, जिसमें एक ministry of external affairs, that is foreign ministry, right, and plus and defense ministry, दोनों ही देश के external affair ministers और defense ministers, they will, so this is two from the India and 2 from USA, 2+2. तो ये कंटिन्यू करेंगे, हर साल बात करेंगे 2+2. So this was started in 2018. So this is one of the major development in the India defense agreement between India and USA. Is this clear? समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखिए. In 2018, you have written 2+2 dialogue was held between India and USA in India. Now write down some point related to 2+2 dialogue. The 2+2 dialogue is conducted between the 2+2 dialogue is conducted between the defense and foreign affairs ministers of both countries. The 2+2 dialogue is conducted between the defense and foreign affairs ministries of both countries. Next point, the 2+2 dialogue aims to provide the 2+2 dialogue aims to provide a positive, forward-looking vision for the India-US strategic partnership. Vision for the India-US strategic partnership, and to promote synergy in their diplomatic and security efforts. And in diplomatic efforts. ठीक है, synergy, SYNERGY. What is synergy? हाँ, synergy. Boost, एक kind का boost आप कह सकते हैं, right? So this is the background related to this agreement. Now write down the and security efforts. चलिए, now write down. Now we are writing related to current, और ये current मैं आपको दे रहा हूँ जो recent visit of मोदी साहब हुआ ना, right, that is. Write down an agreement to co-produce. हाँ, in that agreement बोलिए.
हाँ, डिफेंस एग्रीमेंट में ही जो करंट डेवलपमेंट हुआ है, एन एग्रीमेंट टू को प्रोड्यूस द जीई, co-produce means together they are producing, GE capital में GE F414 engine, GE F414, this is a company, General Electric, and this is the engine F414 engine. So GE F414 engine, jet engine, was signed between General Electric and HAL. An agreement to co-produce the GE 414 jet engine was signed between General Electric GE and Hindustan Aeronautical Limited HAL. ठीक है, next point. GE General Electric and HAL Hindustan Aeronautical Limited. This is a company, Indian company, public company owned by the government who deals in the defense production. कि हमारे यहाँ अभी प्रोडक्शंस जो हैं वो डिफेंस से रिलेटेड, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, राइट टू द प्रोफेशन, है कि सभी को कोई भी प्रोफेशन चुनने का अधिकार है, लेकिन ये स्टेट को किसी भी प्रोफेशन को मोनोपोली बनाने से रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से डिफेंस अभी स्टेट का मोनोपोली है, डिफेंस में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं बना सकता। जैसे आपका अमेरिका का नासा है, बट एलन मस्क का भी अपना एक स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स, के थ्रू वो रॉकेट्स बना रहे हैं डिफेंस में, वैसा इंडिया में प्रोविजन नहीं है। तो हाँ, बट अभी वो है नहीं, अभी मोनोपोली है डिफेंस सेक्टर में किसकी, गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर। दिस HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड देन पब्लिक सेक्टर कंपनी विच डील्स इन दिस। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुई है रिलेटेड टू इंजन F414 इंजन। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए, तो एरोनॉटिकल इंजन। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज एग्रीड टू प्रोक्योर India has agreed to procure India has agreed to procure 31 high altitude long endurance 31 high altitude long endurance HALE 31 high altitude long endurance unmanned aerial vehicle UAV unmanned aerial vehicle unmanned बिना आदमी का UNMANED unmanned aerial हवा vehicle गाड़ी, it means it is talking about ड्रोन आती है ना, so that is been, it is an unmanned aerial vehicle. named General Atomics MQ-9B named General Atomics MQ, नेम, इसका नाम क्या है वो लिख रहे हैं, नेम्ड जनरल एटॉमिक्स AQM-9B जनरल एटॉमिक MQ-9B drones from USA ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, US इंडिया डिफेंस एक्सेलरेशंस इकोसिस्टम, इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन
ecosystem. Indus X, India, US, India, US, Indus X, India, US acceleration ecosystem was launched. India, US acceleration ecosystem was launched, which will facilitate joint defense technology innovations. Which will facilitate joint defense technology innovation. Joint defense technology innovations and co-production of advanced defense technology. And co-production of advanced defense technologies between the two countries. Co-production of advanced defense technologies between the two countries. Okay. Next point. Indus, India, US, X. Indus, launched by. Next point. Indus launched by US Department of Defense. US Department of Defense and Indian Defense Ministry. ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसको यूएन डिफेंस डिपार्टमेंट और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है. नाउ राइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डील फॉर इंडिया. इस डील से इंडिया को क्या फायदा होगा? तो सिग्निफिकेंस ऑफ द डील फॉर इंडिया क्या होगा? सबसे पहला, डिफेंस को बूस्ट मिलेगी, राइट? द फर्स्ट, boost to Indian fleet. Indian fleet, FLEET. Now what does this mean? Write down under this heading, defense. First आपने लिखा है, first significance is it will boost Indian fleet. What does it mean? It means that the deal will allow HAL. The deal will allow HAL, Aeronautical Limited, to manufacture the GE F41, manufacture the GE's F41, F414 engine, manufacture the GE, जो GE कंपनी ने F414 टेक्नोलॉजी जो इनको ट्रांसफर किया है, तो इस पे अब काम HAL से खुद बनाएगी. अब पहले बाहर से आ रही थी, यहाँ असेंबल हो रहा था, अब ये टेक्नोलॉजी इनके पास आ गई है, अब ये HAL खुद बनाएगी. तो इससे डिफेंस, इंडिजिनस डिफेंस बूस्ट मिलेगा. मेड इन इंडिया, खुद से इंडिजिनस, समझते हैं, राइट? इंडिजिनस, अब वो अपना मेड इन इंडिया बनेगा, राइट? इससे डिफेंस को बूस्ट मिलेगा. सो अलाउ इंजन JE F41 engine for the indigenous light combat aircraft, LCA, light combat aircraft, bracket LCA. And what is indigenous light combat, COMBAT, combat aircraft, bracket LCA. And what is the name of LCA? नहीं ना, उसका नाम क्या है? तेजस. लाइट LCA, इंडिया का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस MK2, तेजस MK2. MK2. तो अभी क्या हो रहा है? अभी तेजस यही टेक्नोलॉजी कर रही है यूज, लेकिन ये क्या कर रही है? GE बना रहा है इसके लिए अमेरिका में.
वो इंजन यूज कर रही है तेजस अभी तक। और जब इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगा तो इंडिया में ही वही इंजन बनेगी। अब वही इंजन फिर इंडिया में बनने के बाद जी तेजस में अप्लाई होगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, सस्ता भी पड़ेगा और हमारा इंडिजिनियस भी होगा। तो अभी से फायदा, पहले क्या हो रहा था कि वो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे थे तो हमारा डिपेंडेंस बढ़ा हुआ था उनके ऊपर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई रेसिपी बनाते हो, आपने अग्रवाल छोले भटूरे सुने होंगे, उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भूख, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भूख लगनी चाहिए। तो दिस इज उनका एक बोलते हैं ना, वो मेरा हिडन रेसिपी है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो टेक्नोलॉजी ऑल्सो काइंड ऑफ हिडन प्रोवाइडिंग, अगर हम दे देंगे तो उनकी डिपेंडेंस हमारे ऊपर से खत्म हो जाएगी, हमारा ट्रेड खत्म हो जाएगा, वो खुद बिफोर दिस अरेंजमेंट वी आर डिपेंडेंट बनाकर पर्पस उसे लगा। दे हैव ट्रांसफर्ड द एनर्जी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को दे दिया उन्होंने। अब इंडियन साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करेंगे, उसको बनाएंगे तो वो खुद रेसिपी आएगी। और उस पर रिसर्च सब इंडियन साइंटिस्ट को भी पता चलेगा कि इसमें कौन सा मसाला अब देखिए पहले जैसा क्या शुड बी चेंज। नाउ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वो ट्रेड कर रही है, इन्हें कह दिया अगर आप नहीं देंगे तो हम फ्रांस से ले लेंगे, तो ये तो ले ही लेगी। हाँ फ्रांस भी रेडी है, यस, तो फिर इस हो गया। इसका टेक्नोलॉजी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो वर्ल्ड ऑर्डर में, वर्ल्ड इंटरनेशनल में इतने लोग क्यों इसमें रिसर्च करते हैं? नाउ एआई गोइंग टू कंट्रोल ना थ्रू एआई, तो एआई टेक्नोलॉजी बहुत जगह यूज हो गया। दीज ऑल आर डेटा रिएक्टर। नाउ एक न्यू शुरू करके मतलब हम डिफरेंस नहीं रहे, कभी last convention that is the last but convention अभी आप देखिए हमारे बॉर्डर अभी भी ड्रोन के they are now Pakistan using drone to deliver the drugs and arms and ammunition। आप पंजाब में अक्सर देखते होंगे, तो आपने पढ़ी अगर आप न्यूज़ तो आपको देखने को मिलेगा पंजाब में अक्सर आए दिन क्या हो रहा है, ड्रोन के थ्रू ड्रग्स भेज रहे हैं, आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए भी काउंटर चाहिए। तो टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग टू बी, नाउ वी आर इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी। आगे चलकर हम डिपेंड नहीं, हम खुद का बनाएं, तो समडे ऐसा हो कि हम जीई टेक्नोलॉजी को पढ़ करके हम टेक्नोलॉजी बना लेंगे। Technology transfer. Only a few countries like Russia, France. Only a few countries like US, Russia, UK, and France have mastered technology. US, UK, Russia, and France mastered technology, and the technology transfer will help India to join the league in, and the technology transfer to join the league in the future. League in the future means
तब आगे 4 देश में इंडिया का भी एक नाम जुड़ जाएगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। नेक्स्ट future indigenous development. So next benefit of this transfer is with future indigenous development. Future indigenous development. समझ गए? How it will be done? Why is it not coming properly? Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Now is it okay? Raji, the voice is coming. Hello. Sir, volume break हो रही है. That may be due to the technology ना. अभी तो ट्रांसफर हो रही है टेक्नोलॉजी यूएस से. It will take time. Hello. Now it is okay. That will be due to technology. घंटे लगा के बोल नहीं रहा हूँ. Connected maybe due to the connections. यहाँ भी यही 2-3 लोगों ने बताया है. आज 3-4 लोग हमें देख रहे हैं. 1 मिनट बोल दूं मैं इनको. सर वो वॉइस क्रैक का वो प्रॉब्लम बता रहे हैं. ऑनलाइन देखिए. ओके सर, आवाज आ रही है सर. अभी ओके है. चलिए राइट आउट. तो इंडिजिनस डेवलपमेंट, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट विल बेनिफिट इंडिजिनस डेवलपमेंट. ठीक है. नाउ राइट डाउन द, सॉरी, हाँ फ्यूचर इंडिजिनस नहीं अभी सर. ओके सर, अभी उन्होंने बताया ओके. तो इंडियन साइंटिस्ट, वायर सेटिंग सही करो. तो मुझे आईटीआई पढ़नी पड़ेगी. And on the engine, Indian scientists and on the engine will help India in its future. Hand on engine will help India in its future. Indigenous defense development. Help in its future indigenous defense development. ठीक है. Next point. So these are the benefit of the significance of this trade. जो भी trade हुआ उसका significance है. Now write down it will help. Help. Now it will, this trade will help. Trade जो भी हुआ है agreement जो इनके बीच में हुई है. हाँ. It enhance connectivity between American and Indian defense startup. So how it will help? So it will enhance connectivity between American and Indian defense startup. Next point, creation of Indo-US Joint Innovation Fund. Creation of Indo-US Joint Innovation Fund for the funding of defense startup.
Indo-US Joint Innovation Fund for the funding of defense startup. Next, explore joint opportunities in high defense innovations. Explore joint opportunities in high defense innovation, research and development. High tech defense innovation, research and development. Explore joint opportunity in high tech defense innovation, research and development. ठीक है? Yes or no? Clear? Now write down the challenges. अब इस डिफेंस एग्रीमेंट के challenges क्या क्या हैं? फर्स्ट चैलेंज क्या होगी? यूएस के साथ रिलेशन है, तो फर्स्ट चैलेंज यूएस के साथ रिलेशंस में क्या बीच में आएगी? रसिया के साथ रिलेशन इंडिया का. ठीक है, सो फर्स्ट इज इंडिया टाई विथ रसिया. हम लिख रहे हैं चैलेंजेस ऑफ दिस, इस ट्रेड एग्रीमेंट के चैलेंज क्या क्या है. तो फर्स्ट चैलेंज इज इंडिया टाइज विथ रसिया. रसिया के साथ इंडिया की दोस्ती है, तो ये भी, क्योंकि रसिया और यूएसए दोनों क्या हैं? ऑपोजिट है, दे आर नॉट इन अलाई. यस और नो? तो दिस विल पुट अ चैलेंज. ठीक. सेकंड, इंडिया स्टैंड इन ज्वाइनिंग अलायंस. इंडिया स्टैंडिंग ज्वाइनिंग अलायंस. कौन से अलायंस के लिए इंडिया ने मना कर दिया? NATO प्लस. NATO प्लस. सो राइट डाउन दैट इंडिया विश टू अपहोल्ड its strategic sovereignty. इंडिया विश टू अपहोल्ड its strategic sovereignty. Uphold its strategic sovereignty and has recently rejected the US invitation to join NATO plus. The US invitations to join NATO plus. US invitations to join NATO plus. ठीक है? This is the second challenge in the relations. Next. Third challenge is technology transfer. Technology transfer. The US defense corporation companies, the US defense companies, the US defense companies are reluctant. Reluctant का मतलब समझते हैं? हेजिटेट होना, वो नहीं चाहते हैं. तो कंपनी जो है यूएस के डिफेंस, वो चाहते नहीं कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, हमारा बिजनेस इम्पैक्ट हो जाएगा. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंज. नहीं, तो यूएस डिफेंस कंपनीज आर रिलक्टेंट टू शेयर देयर टेक्नोलॉजीज विद इंडियन काउंटर पार्ट्स. Reluctant to share their technologies with Indian companies. ठीक है? This is the third challenge between the relations. Next challenge, US funding to Pakistan. US इंडिया को भी दे रहा है डिफेंस टाइप, पाकिस्तान के साथ भी है. नैम टाइप करना, ये नैम से अलग काम करता है. ये दोनों को दे रहा है, दोनों लड़ो. US फंडिंग टू पाकिस्तान, दिस इज द अनदर चैलेंज. राइट, जैसे F-16 दिया है चाइना पाकिस्तान को, इंडिया यूएसए ने F-16 फ्लाइट जो यूएस के पास है, सॉरी पाकिस्तान को, दैट इज गिवन बाय यूएस. एंड नेक्स्ट इज द लास्ट चैलेंज इज
inconsistent in US strategy stance, inconsistent in US stance, 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 inconsistence with US stance. इसका मतलब समझ रहे हैं? मूड स्विंग बहुत होता है यूएस का, कभी इंडिया के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी कहेगा ठीक हम लोग कर लेते हैं, अच्छा नहीं हटाओ अभी मन नहीं है। तो यूएस का कोई भरोसा नहीं है। 9/11 में देखिए, मुंबई अटैक में, कारगिल में देखिए, तो यूएस का कोई वो भरोसा है नहीं जब तक हो नहीं जाए तब तक। हाँ, अभी बहुत चीज चल रहा है इधर उधर, वो हर जगह एक्सप्लोर करता रहता है। तो बिकॉज ऑफ दिस मूड ऑफ यूएस, सो इट इज ऑल्सो अ चैलेंज। ठीक है, देन राइट डाउन नेक्स्ट इज वे फॉरवर्ड। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आपका जो अब एक आंसर मॉडल रेडी हो गया इसके बाद, अगर आप पूरा देखेंगे आपने क्या लिखा है, तो एक आंसर मॉडल रेडी है जो क्वेश्चन पोटेंशियल एग्जाम में। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसमें, लिखिए। फर्स्ट, balancing the relationship with Russia and US is essential for India. Balancing the relationship with USA and Russia is essential for India. The relationship with Russia and USA or USA and Russia is important for India. Full stop. Continue the point. Then US is necessary for India's technological and economical ambition. US is important or significant or necessary for, मैंने आपको 3 synonyms बताए हैं, लिखना तीनों नहीं, कोई एक लिख सकते हैं। US is significant for India's technological and economical ambition. Whereas Russia is relevant for India's energy and security needs. Whereas Russia is relevant for India's energy and security needs. Relevant. Russia is relevant for India's energy एंड सिक्योरिटी। अभी हम ले रहे हैं वहां से ऑयल ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, सेंट्रल एशिया, यस और नो, तो हमारे लिए उस हिसाब से वो रसिया भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के बीच में बैलेंस करके इंडिया को चलना है। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन टू दिस चैलेंजिंग। सेकंड सॉल्यूशन, इंडिया नीड्स टू स्ट्राइव फॉरवर्ड, इंडिया नीड्स टू स्ट्राइव फॉरवर्ड its defense research and reduce its dependence on foreign power for defense supplies. Reduce its dependence on foreign power for defense supplies. ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या बताया इसमें कि इंडिया को अपना इंडिजिनस डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए जिसके थ्रू फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो जाए, राइट? तो इससे भी ट्रेड और डिफेंस में स्ट्रांग हो जाए। दैट इज मेक इन इंडिया पॉलिसी जो इंडिया का है, दैट इज शुड बी फॉलोड, इंडिजिनस डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज कंटिन्यू कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक। Continue cooperation in Indo-Pacific with other regional power can deter the aggression of China. Can deter the aggression in China. Aggression of China. Deter. D-E-T-E-R. Indo-Pacific region.
continuous cooperation in Indo-Pacific with other regional power can deter the aggression of China in the Indo-Pacific region. ठीक है? Yes or no? Right? Now write down India-US trade relations. This is defense agreement is done. ठीक. Now आप इस डिफेंस एग्रीमेंट को अगर आप देखें तो यू हैव बीन रिटन एन वन आंसर. क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हाउ इट विल बेनिफिट इंडिया, व्हाट आर इट्स चैलेंजेस एंड व्हाट आर इट्स सॉल्यूशंस टू अचीव. नाउ राइट डाउन इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस. अब बहुत इंटरेस्टिंग दो पॉइंट हैं ट्रेड रिलेशंस के बीच में इंडिया एंड यूएस में. द फर्स्ट, यू माइट बी नोइंग, और जिनको नहीं पता इट विल सरप्राइज यू, दैट रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस विद यूएसए, यूएसए इज वन ऑफ द नेशंस जिसके साथ इंडिया सरप्लस में है, ट्रेड सरप्लस में है. लेता कम देता ज्यादा, ट्रेड सरप्लस. इंडिया इज वन ऑफ द, बाकी लोगों के साथ वो जैसे चाइना के साथ आपने देख लिया, हमने देखा कि चाइना में ट्रेड डेफिसिट है ड्यू टू द मार्केट एंड ऑल दिस. सो यूएसए के साथ इंडिया ट्रेड सरप्लस में है. ठीक. एंड सेकेंड, दैट इंडिया, यूएसए हैज बिकम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर विद इंडिया आफ्टर सरपासिंग चाइना. चाइना अब सेकेंड हो गया और यूएसए फर्स्ट हो गया. So this is the two striking feature of Indian trade relations between India and USA. Is it clear? So write down first point that USA has surpassed China. वही अब इसी ट्रेड में डिफेंस के सारा ट्रेड लिखेंगे, डिफेंस भी और बाकी चीजों को. इसी में हम स्पेस टेक्नोलॉजी भी लिखेंगे. USA has surpassed China to become India's top trading partner in 2021-22. Surpassed China to become India's top trading partner in 2021-22. Next point. India has a trade surplus with US. ट्रेड सरप्लस, सरप्लस मतलब डेफिसिट, जहां पर एक्सपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं. इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट, दिस इज ट्रेड डेफिसिट. और सरप्लस, इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा. हाँ, व्हाट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग? हम वी विल डू मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इन दिस. अभी हमने सिर्फ एग्रीमेंट किया विद दैट. ठीक है राजी. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग. तभी आपके जितने भी संख्या वो दूर होंगे. जस्ट वन वी विल कंप्लीट द रिलेशंस. ठीक है. इंडिया हैज अ ट्रेड सरप्लस विद यूएसए. नेक्स्ट, 13th मिनिस्टेरियल मीटिंग ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम. 13th 13th ministerial meeting of India US trade policy forum. Trade policy forum to discuss trade related issues. Trade related issue. ठीक है. A new work, next point, a new working group on resilient trade launched. Resilient, RESILIENT trade launched. A new working group, resilient trade, RESILIENT launched.
trade launch, resilient trade launch, to deepen bilateral dialogue, to deepen bilateral dialogue, तो वो ट्रेड में आएगा राज्य मोस्ट फेवर्ड नेशन, राइट. This we have started trade, उसमें most favored nation का status of America and all this will be come under this, right. And this will also will discuss in WTO policy. ठीक है. अभी जो हमने किया है वो डिफेंस एग्रीमेंट लिखा है. Now this most favored nation is related to trade between India and America. To deepen bilateral dialogue, this we will cover. Dialogue on a range of issues. To deepen bilateral dialogue on a range of issues which can enhance the resiliency and sustainability. Dialogue on a range of issues which can enhance the resiliency and sustainability. Resiliency, RESILENCY, and sustainability of trade relationship between the two nations. ठीक है. Next point. An intragrency, interagency, an interagency, no, sorry, interagency, an interagency-led strategic trade dialogue, an interagency-led strategic trade dialogue was launched to undertake efforts to address export control and facilitate technology transfer. Address export control and facilitate the technology transfer between the two countries. Facilitate technology transfer between the two countries. Next point. A MOU, that is Memorandum of Understanding, on semiconductor supply chain. MOU on semiconductor supply chain and innovation partnership was signed. An innovation partnership was signed. And innovation partnership was signed between the two countries. To promote commercial opportunities. Research, talent, and skill development. Okay? This is related to semiconductor. Next point. A public-private joint task force. A public-private joint task force, co-lead, co-lead, lead
by India's Bharat 6G co-lead LEAD lead by India's Bharat 6G 6G capital G and US next G Alliance for the development and deployment of Alliance for the development and deployment of Open Radio Access Network, that is Open RAN. Open Radio Access Network, that is Open RAN system was launched. ठीक है, इसके थ्रू क्या होने वाला है, कौन आने वाले हैं, नेक्स्ट जी. इट मीन्स नाउ एलन मस्क विल कम इन इंडिया एंड प्रोवाइड अ नेटवर्क सॉल्यूशंस. तो जो अभी टैरिफ लगता है ना, डेटा कम्युनिकेशन इतने का रिचार्ज कराइए, उतने का रिचार्ज में इतना जीबी, दैट विल कम डाउन. ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ें. व्हाट इज ओपन रैन, ये सब भी इंपॉर्टेंट है इन दैट साइंस टेक्नोलॉजी. यहाँ तो सिर्फ आपको ये पता होना है कि इनके बीच में ये रिलेशन हुई है. हियर द नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चंस मे बी कम, हाउ द रैन फंक्शन, व्हाट इज रैन, ओपन रैन, जो अभी रिसेंटली हुआ है. हाँ, ये आपका बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, राइट, रेडियो एनालिटिकल सर्विस, एक्सेस नेटवर्क सर्विस. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. इंडिया यूएस रिलेशंस में टेक्नोलॉजी में बहुत काम हुआ है, तो इसकी वजह से आपका टेक्नोलॉजी का जो साइंस एंड टेक का जो टॉपिक है ना, वो बहुत एक्सपैंड हो जाता है. आपको उसमें पढ़ना क्या है, जी जो F414 टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, कैसे बेटर है, ये सब आपको साइंस टेक में पढ़ना है. व्हाट इज रैम, ओपन रैन, दिस यू हैव टू स्टडी इन साइंस. हाउ द सेमीकंडक्टर फंक्शन, आप लोग अगर स्कूल में 12th में अगर साइंस रहा हो तो आपने पढ़ा होगा एंड नॉर जॉर गेट, पढ़ा है आपने गेट 12th में. हाँ, PNP, तो दैट इज सेमीकंडक्टर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगेन नेक्स्ट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी. इंडिया यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म. अब ये इंडिया और यूएस एक नेक्स्ट लेवल का ट्रेड चल रहा है. वो दाल चावल और ये बंद हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रेड हो रही है. इंडिया यूएस क्वांटम coordination mechanism was established. Quantum mechanism was established to facilitate collaboration among industry, comma collaboration among industries, comma academia and government. ठीक है, नेक्स्ट. A new initiative called innovation handshake. Next point, a new initiative called innovation handshake. ये सब कब हुआ है, अभी जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर गए हैं ना, ये उनके बीच का रिलेशन है. सारा डेवलपमेंट जो आप लिख रहे हो ना, उसी दौरान का ये. A new initiative called innovation handshake should be in the inverted comma was started to connect the handshake, innovation handshake. हैंडशेक समझते हैं ना, यस.
इनोवेशन हैंडशेक इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा उसे, was started to connect the startup ecosystem of two countries. Was started to connect the startup ecosystem of the two countries. Ecosystem समझते हैं ना, एनवायरमेंट में पढ़ा होगा आपने इकोसिस्टम, जो एक दूसरे से सब कोई कनेक्ट होता है। नहीं, इकोसिस्टम ऐसे भी जनरली एनवायरमेंट में भी इकोसिस्टम होता है, तो फूड चेन भी इकोसिस्टम का कनेक्टिविटी है, हम भी डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। सो दैट इज एन स्टार्टअप इकोसिस्टम, जहां एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए हर चीज चाहिए, नीड, एवरी नीड, वो सब प्रोवाइड कराएंगे। फंड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, रिसर्च हो गया, ट्रेनिंग हो गया, तो वो एक इकोसिस्टम हो गया। जैसे आईएएस बनने के लिए इकोसिस्टम्स है ना, कि आपको मटेरियल भी अच्छा, फैकल्टी भी अच्छी, प्रिपरेशंस, गाइडेंस, हेल्थ रिलेटेड, एवरीथिंग, दैट इज एन इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम जहां हर चीज का फैसिलिटी हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, दैट इज एन इकोसिस्टम। ठीक है, so you have written startup to connect the startup ecosystem of the two countries, comma, which is to support the US India initiative, which is to support the India US initiative on आपका आई फ्लू हो गया, बहुत चला हुआ अभी दिल्ली में। इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईसेट, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईसेट, सीईटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईसेट, ये देखिए आईसीईटी, which was set up in January 2023. ठीक है, now this also you have to study in science and technology, what is ISET. मैं आपको होमवर्क दे, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अंडर द ट्रेड, India US new and emerging renewable energy technology action platform was launched. India US new and emerging renewable technology action platform. Technology action platform was launched. Which will accelerate cooperation in green hydrogen. Comma, offshore cooperation in green hydrogen, comma, offshore and onshore wind, offshore OFFSHORE and onshore wind, comma, and other emerging technologies. Other emerging technologies. कंटिन्यू कीजिए पॉइंट को, और पैराग्राफ चेंज के लिए रिलेटेड टू द, जो आपने पॉइंट लिखा उसी से रिलेटेड, राइट। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज टू सपोर्ट, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज टू सपोर्ट Indian Railways ambitious target.
support Indian Railways ambitious target to become a inverted comma लिखे net zero carbon emitter by 2030. Net zero carbon emitter by 2030. Net zero should be in inverted comma carbon emitter by 2030. समझ रहे हैं? अभी वो कार्बन एमिटर है, डीजल इंजन है, उसकी वजह से तो अभी 2030 तक नेट जीरो. नेक्स्ट, (2030) Next, India become the new member of US-led Mineral Security Partnership. India become the new member of US-led Mineral Security Partnership. India become the new member of US-led Mineral Security Partnership (MSP), which aims to ensure the supply of critical minerals. Next, आप ये पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, इफ यू गो थ्रू दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशंस और एग्रीमेंट इमर्ज फ्रॉम द मीटिंग कि अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या दोनों के बीच में बात हुई है. तो हमने यहाँ क्लीन एनर्जी की बात की, उन्होंने टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, ट्रेड की भी बात हो गई, ठीक है, सेमीकंडक्टर की बात हो गई, ओपन एरिया मार्केट नेटवर्क की बात कर लिया हमने, आईसी सेट की भी बात कर ली. ये सब बात ये पिछले 2-3 दिनों में जो उन्होंने बैठ के बात की है ना, वो हुई है बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है. नेक्स्ट, अभी बचाइए, इंडो यूएस ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट, इंडो यूएस ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट was established to deeper research partnership. Indo-US Global Challenge Institute was established to deeper research partnership between institutions in the US and India. Between US and India. Okay. Next, the US is opened 2 new consulate in India in Bangalore and Ahmedabad. US is to open 2 new consulates, CONSULATES consulates in India. 2 in India. अब कहाँ Bangalore and Ahmedabad. Consulate, do you understand the purpose of consulate is to visa. जो वीजा हो जाए रिलेटेड उसके लिए. काउंसुलेट इन इंडिया इन बैंगलोर, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद. And India is to operationalize its new consulate in Seattle. Operationalize new consulate in Seattle. SEATTLE. Its new consulate in Seattle. ठीक है, this clear? Operationalize its new consulate in Seattle. Seattle is a state in
SEATTLE, सियाटल, सियाटल एक जगह है यूएस में, SEATTLE, सियाटल, ठीक है, यस और नो, राइट। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, इंडिया यूएस स्पेस रिलेशनशिप। और अगर बोल आपको कहना सर कितना है, तो फिर ये मोदी साहब को बोलिए ज़्यादा ना जाया करें क्योंकि सब करंट डेवलपमेंट है और आपको लिखना पड़ेगा रिलेशनशिप। और इस बार इंडिया यूएस रिलेशनशिप मेंस में हो सकता है कि पूछा जाए और पोटेंशियल है। इंडिया यूएस स्पेस रिलेशंस, फर्स्ट NASA, NASA will provide advanced training to Indian astronauts will provide advanced training to Indian astronauts with the goal of mounting mounting a joint efforts to International Space Station in 2024. Mounting a joint efforts to International Space Station in 2024. तो वहां भी इंडियन जाएंगे अब ISS में। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया साइन द US-led Artemis Accord. India signed the US-led Artemis Accord as its 27th member. Artemis Accord, AR दिख रहा है, ARTEMIS, Artemis Accord as its 27th member. बता रहा हूँ, लिखिए। डेकोरम मेंटेन रखिए क्लास का, तो साइलेंट रखिए फोन को। Which aims to establish a common vision. देखिए, now what is Artemis Accord we are writing? Which aims to establish a common vision आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है वो लिखना है। आपने लिखा है कि आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है बिकमिंग 27th मेंबर टू दिस, है क्या ये? तो दिस आर्टेमिस अकॉर्ड aims to establish a common vision via a set of principles, guidelines and best practices via a set of principles, guidelines and best practices to enhance the governance principles, guidelines and best practices to enhance the governance of the civil exploration and use of outer space. Common vision via a set of principles, guidelines and best practices and the governance of a civil exploration
एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस। तो एटमिस अकॉर्ड है वो आउटर स्पेस से रिलेटेड है, इंडिया से, आई मीन सॉरी अर्थ से नहीं है, आउटर स्पेस। उसको एक्सप्लोर करना कि कहाँ क्या है, क्या पोटेंशियल है, कहाँ जीवन है, कहाँ पानी है, इसको बर्बाद किया, अगला किसको बर्बाद करेंगे, राइट, उसको एक्सप्लोर करना है। तो इंडिया इज बिकम अ मेंबर ऑफ 27 एज ए 27th मेंबर। तो सिविल मीन्स रहना, कॉलोनीज ये सब बनाने के लिए और आउटर स्पेस का यूज करने के लिए, राइट। So this is the ATMIS accord. Now write down a subheading related to this is significant of ATMIS accord for India. इंडिया को क्या फायदा होगा ATMIS accord से, क्यों साइन किया इंडिया ने। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द एग्रीमेंट फॉर इंडिया, ATMIS accord, ATMIS accord, ATMIS accord लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ ATMIS accord, ठीक है। फर्स्ट सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, push to Gaganyaan mission, push to Gaganyaan mission means it will help in India's Gaganyaan mission. इंडिया का मिशन है ना चंद्रयान, मंगलयान। चंद्रयान इज रिलेटेड टू मून, मंगलयान इज रिलेटेड टू मार्स, तो गगनयान इज रिलेटेड टू outer space Gagan, which will help ATMIS accord. So it will push the Gaganyaan mission of India. So push to Gaganyaan mission. Write down related to this. The in-hand training assurance to Indian astronaut. The in-hand training assurance to Indian astronaut by NASA. By NASA. Training assurance to Indian astronaut by NASA. NASA, will help India to achieve the objective of its first manned space mission. To help India to achieve the objective of its first manned space mission, that is Gaganyaan. Manned, MANNED, manned space mission. इससे पहले आपने लिखा था अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उसमें क्या मतलब था, बिना आदमी के उड़ेगी। अब गगनयान इंडिया का पहला मिशन है जिसमें इंडिया अपने यहाँ इंडिजिनस ये बनाएगा द स्पेसक्राफ्ट और उसमें आदमी भेजेगा। दिस इज मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान। इंडिया ने अभी तक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जिसको आदमी भेज सके, राइट। तो इंडिया का पहला, तो दिस विल हेल्प थ्रू द ATMIS accord, जिसमें उसको हेल्प मिलेगा क्योंकि यूएस हैज एन एक्सपीरियंस भेजने का, है ना। नेक्स्ट, नहीं समझे वो तो हो गए। अब वियर एंड टियर, अब विदाउट रिस्क कौन सा काम है मुझे बताइए। डेवलपमेंट करना है, ग्रो करना है तो थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। जो हो जाता है उसमें भी रिस्क है। सेकेंड बेनिफिट ऑफ दिस ATMIS accord, एंट्री टू ISS, एंट्री टू ISS, नॉट ISIS, ठीक है। ISI नहीं, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। राइट डाउन, द NASA trained Indian astronauts. The NASA trained Indian astronauts might be the first set of Indians. Might be the first set of Indians might be the first set of Indians to ever enter into the ISS.
enter into the ISS, and be the first Indian to enter into the ISS and conduct research and experiment there. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, वहाँ पर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च, एंट्री टू गेटवे, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज एंट्री टू गेटवे. ठीक है. Now what is gateway? The gateway is an upcoming NASA-led international lunar. Gateway क्या है वो लिखिए. Gateway is an upcoming NASA-led international lunar orbital station. Gateway is an upcoming NASA-led international lunar orbital station for Artemis astronauts. For Artemis astronauts, right? And India can also get its birth through the accord. And India can also get its birth. मतलब उस गेटवे में इंडिया को भी एक सीट मिलेगी. Why? Because India has signed the accord. ठीक है. So this is entry to gateway. Birth, BERTA to the accord. समझ रहे हैं या नहीं? एक्सप्रेशन आपका कभी कभी बीच में वो हो जाता है. ओके, मुझे लगता है मैं इसलिए मैं 2-3 बार बोलता हूँ, पूछता हूँ आपको एक्सप्रेशन देख करके. ठीक है. तो ये जो अकॉर्ड साइन किया उससे क्या होगा, गेटवे एक प्लेटफॉर्म बना रही है, लूनर प्लेटफॉर्म. ठीक है, एक्सप्लोरेशन के लिए. लूनर हम चंद्रयान बोलेंगे ना, वो तो लूनर ही बोलेंगे, राइट. उसमें इंडिया को भी स्पेस मिलेगी थ्रू दिस अकॉर्ड. तो दिस विल बी बेनिफिट एट दिस अकॉर्ड, राइट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, enhance capabilities of ISRO. Now how it will enhance the capabilities of ISRO, we are writing the signing of the accord could fast track India's space capability. The signing of the accord could fast track India's space capabilities. And ambition, and help it achieve cost effective. Space capabilities, listening, India's space capabilities and ambitions, and help it to achieve cost effective by being a member of the accord. Being accord का member होने से उसको ये फायदा होगा, by being a member of accord. ठीक है, right. Now write down the challenges in space operations. कोई भी टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट नहीं है जहाँ पर चैलेंज ना हो. challenges in space operations. First, mismatch interest.
कैसे इंटरेस्ट अलग है? नासा का जो इंटरेस्ट है वो बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट है, और इंडिया का जो एम्बिशन है फिलहाल वो विद इन अर्थ ऑर्बिट है। तो मिसमैच हो, तो आउटर स्पेस हम कहीं बाहर जाकर ढूंढ के आए, और इंडिया चाहती है, आप चाहते हैं कि मैं काम में मुखर्जी नगर घूमूं विद इन द अर्थ ऑर्बिट। कोई चाहता नहीं सीपी चलते हैं, हरिद्वार चलते हैं, बियॉन्ड द अर्थ ऑर्बिट। गोवा, इट इज बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट। मिसमैच इंटरेस्ट, राइट नाउ while the NASA ambitions are beyond Earth orbit, while NASA ambition is beyond Earth orbit, whereas ISRO ambition, lies mostly within the Earth orbit. Within the Earth orbit. ठीक है. Next is Russian collaboration. Next challenge is Russian collaboration. रशियन स्पेस स्टेशन का रॉस्कॉन नाम है. हाँ, रशिया स्पेस एजेंसी help India that is ISRO, right? Help India bracket ISRO from its first mission Aryabhat to recent Gaganyaan. First mission Aryabhat, पहला रॉकेट था आर्यभट्ट इंडिया का, पढ़ा होगा आपने आर्यभट्ट, यस और नो, टू रिसेंट गगनयान. And has various MOUs signed with ISRO. And various MOUs signed with ISRO. ठीक है. तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि अब आप वहाँ चले जाएंगे और यहाँ पहले से थोड़ा सा नाराजगी हो जाएगी, फिर वो आएगा अभी फिलहाल वो किसी और का कुछ ऐसा कर कमाल, राइट, तो वो प्रॉब्लम आएगी. नेक्स्ट इज फिनेंशियल कंस्ट्रेंट. द नेक्स्ट चैलेंज इज फिनेंशियल कंस्ट्रेंट. आप लोग डल हो जाते हो ना, तो बीच में थोड़ा सा मुझे चीयर अप करना पड़ता है. कंस्ट्रेंट, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट समझ रहे हैं? आर्थिक तंगी. नासा के पास बहुत पैसा है, लेकिन इसरो हमारी तरह है, गरीब है, छोटा पैसा. तभी देखिए कितना कम, 600 करोड़ में 650 करोड़, 615 करोड़ ना चंद्रयान 3. और अभी जो रिसेंटली एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, आदि पुरुष, वो 600 करोड़ की बनी है. तो 15 करोड़ ज्यादा लेकर ये चांद पे चले गए. तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ठीक है. The funding of ISRO is hardly sufficient for its existing program. The funding of ISRO is hardly sufficient for its existing program. And it will need to widen its fund. Widen its fund to suit the demand of new agreement with NASA. Widen, बढ़ाना, बड़ा करना पड़ेगा. Widen its fund to suit, SUIT, suit the demand of the new agreement with NASA. कैसे छोटे छोटे खर्च बढ़ जाएंगे, नहीं,
यहाँ आप टेक्नोलॉजी बना रहे हो तो चाय भी पी लिया 10 रुपए का, वहाँ सिर्फ स्टारबक्स का कॉफी पीते हो। These are the challenges in the India-US space collaboration. Last line. The funds to suit the demand of new agreement with NASA. एटमिस अकॉर्ड के लिए उसके पास फंड चाहिए तो पहले ही कम है, ठीक है। तो दीज आर द चैलेंजेस। और राइट ऑन द वे फॉरवर्ड, क्या हो सकता है करने के लिए। वे फॉरवर्ड, फर्स्ट इंड्यूस लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, इंड्यूस INDUC, वी आर राइटिंग वे फॉरवर्ड, वी आर राइटिंग द सॉल्यूशन, क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड। फर्स्ट इज इंड्यूस लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, किनके बीच में, इसरो और नासा के बीच में। अब ऐसा नहीं कि बस एक आध साल के लिए कर दिया, लंबा हो तो देन इट विल बेनिफिट ऑल्सो, ठीक है। एक्सपीरियंस लेंगे, एक्सपर्टीज लेंगे, देन इट विल हेल्प, ठीक है। अंडरस्टैंड, उसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं खुद से, राइट। नेक्स्ट, सॉरी, यस या नो। नेक्स्ट, इंड्यूसिंग प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी तक सभी फैसिलिटी कौन, गवर्नमेंट ही है, ठीक है। फंड की भी क्रंचेज है, तो प्राइवेट को आप इन्वॉल्व करेंगे तो फंड भी आएगा, राइट, नई टेक्नोलॉजीज भी आएगी, तो बर्डन इसरो के ऊपर कम पड़ेगा और फिर वो ज़्यादा रिसर्च कर पाएगी, और प्राइवेट के आने से रिसर्च एनालिसिस भी ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। सो इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, यस या नो, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉइसिंग फॉर स्पेस एज ग्लोबल कॉमन, इसको लिख लीजिएगा, वॉइसिंग, VOCI, VOICING, वॉइसिंग फॉर स्पेस एज ग्लोबल कॉमन, ग्लोबल कॉमन। इंडिया शुड abide, ABIDE, India should abide by the values of Outer Space Treaty, abide, 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 ABID, abide by the values of the Outer Space Treaty, and continue to push the space, and continue to push the space as a global common for all. As a global common for all, ठीक है। इट मीन्स स्पेस सबके लिए होनी चाहिए, सबके लिए कॉमन। So this is it, right? Is it clear? Yes or no? Right? Now write down the last heading of the India-US relation, that is challenges in India-US trade relationship or tie. तो राज भाई साहब का क्वेश्चन है मोस्ट फेवर्ड नेशन, उसको मैं यहाँ डील करूँ। अभी ऐसे रिसेंटली इंडिया और यूएस के बीच में MF जैसा कोई बात है नहीं, क्योंकि अभी सारा काम किस पे चल रहा है, टेक्नोलॉजी और इसके ऊपर ट्रांसफर का। रिलेशंस या टाई जो भी लिख लें आप। तो फर्स्ट चैलेंज क्या है, ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर, BARRIER, ट्रेड बैरियर, ठीक है। तो राइट डाउन अंडर दिस इन ब्रैकेट, पहले आप ब्रैकेट में लिखिए, ट्रेड बैरियर लिखा आपने, उसके नीचे एक ब्रैकेट बनाइए, नोट, राइट डाउन इन द नोट बैरियर, that USA designate India as a major defense partner. USA designate India as a major defense partner and strategic trade
authorization, major trade defense partner and strategic trade authorization. ठीक है, वी हैव सीन अंडर द ट्रेड स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर में डिफेंस अलग अलग एग्रीमेंट में कर रही है काम, आपने लिखा है पूरा ट्रेड एग्रीमेंट में, यस और नो, राइट। नाउ डिफेंस ट्रेड में क्या कर रही है, राइट डाउन द डिफेंस ट्रेड एंड कोऑपरेशन हैज बीन डिफेंस ट्रेड, नेक्स्ट पॉइंट, defense trade and cooperation has been deepened with signing of 4 foundations, has been deepened, गहरा हुआ है relations, deepened with signing of 4 foundational agreement, 4 foundational agreement, 4 एग्रीमेंट की वजह से डिफेंस टाइप दोनों के बीच में डिपेंड हुआ है, राइट। फर्स्ट, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जनरल GENERAL, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002, जनरल Security of Military Information Agreement 2002. Next, Logistic Exchange Memorandum of Agreement 2016. Logistic Exchange Memorandum of Agreement 2016. Next, communication compatibility and security agreement, communication compatibility and security agreement 2018, agreement between in 2018. The last is Basic Exchange and Cooperation Agreement to 2020. Basic Exchange and Cooperation Agreement 2020. Basic Exchange and Cooperation Agreement 2020. ठीक है, so this is the how it has been enhanced. So first आपने लिखा है challenges, trade barrier. You understand the meaning of trade barrier? टैक्सेस बढ़ा देना, राइट। इम्पोर्ट के जैसे कि 2018 में इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया यूएस ने स्टील के आने पर, तो ट्रेड, इससे ट्रेड क्या होगा, अगर इंडिया से कोई सामान जाती है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो अगर वहाँ पर उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया, तो ट्रेड रिलेशन इम्पैक्ट करेगा इंडिया का एक्सपोर्ट, यस और नो, राइट। सो दिस इज फर्स्ट इज ट्रेड टैरिफ बैरियर। सेकेंड इज सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत। सेकेंड चैलेंज, सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत। इंडिया वांट्स टू बिकम एन आत्मनिर्भर, तो अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को इंडिया क्या कर रही है, एनकरेज कर रही है कि आप चीज़ों को खुद बनाइए। इसके लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करने के लिए क्या करेगी, इंपोर्ट पे थोड़ा सा ड्यूटी बढ़ा देगी, यस या नो, और ऑल्टरनेटिव कहेगी कि आप बनाइए जिससे हम सेल्फ रिलायंस हो जाएं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द challenges in India US trade relationship. Next, third, generalized system of preference, generalized system of preference. Now इसके बारे में लिख लीजिए, what is generalized system of preference. In 2019 USA removed India from GSP. In 2019, USA removed India from GSP. GSP is Generalized System of Preference.
Now, GS full stop. GSP allows eligible developing countries. GSP allows eligible defense developing countries allows eligible developing countries to export duty-free goods to the USA. Eligible developing countries to export duty-free goods to the USA. ठीक है, यानी डेवलपिंग कंट्री से भी जो भी गुड्स आएगी उस पर कोई पैसा नहीं, टैक्स नहीं लगेगा, तो वो माल इजीली होगा, तो मार्केट एक्सेस होगा। तो इस स्टेटस से यूएसए ने इंडिया को हटा दिया 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट वही 4, पॉलिसी ऑफ लोकलाइजेशन। पॉलिसी ऑफ लोकलाइजेशन, राइट डाउन। India's move for creating data center in India. India move for creating data centers in India. India moves for creating data centers in India is being criticized by American companies. Data center in India is being criticized by American company. कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं इसका? फेसबुक का डेटा सेंटर बैंगलोर में बना है। इन साउथ इंडिया देयर इज वन डेटा सेंटर ऑफ फेसबुक। यानी अब इंडिया में जितने लोग भी फेसबुक यूज कर रहे हैं उनका डेटा अमेरिका नहीं जा करके इंडिया में स्टोर होगा। तो पहले जो वो आउटसोर्स कर रहे थे, नाउ इट विल बी क्रिएटेड हियर, यस या नो? तो ये भी एक सेक्शंस में है। नेक्स्ट इज डिजिटल टैक्स। Digital tax. India imposed 2% tax on revenue generated. India imposed 2% tax on revenue generated from broad range of digital service. From broad range of digital service. Offered in India by NRI company. Offer in India by NRI company. ठीक है? Any doubt? Is it clear? Right? So this is India US relations. इसमें हमने मोस्टली क्या किया? करंट से डिस्कशन सारे चीजों को की। ठीक है? So this is all from the India US. Now in the next we will discuss India Russia. इसमें हम थोड़ा सा ये भी देख लेंगे, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक बन रहा है एक रूट। INSC हमने देखा था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर देख रहे थे ना, वो भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। Then we'll start next, right? चलिए, so thank you for being here. We'll meet in the next class, ठीक है? And there is a high chance that we will have class on Saturday also of IR. Timing same ही रहेगी. And by the next week we will be done with IR. ठीक है? चलिए, thank you then. Enjoy the day. Thank you to everyone.